Jain student, today we are going to discuss the type of budget. The type of budget are divided into three parts, that is balance budget, surplus budget, deficit budget. The first, what is balance budget? Government budget said to be a balanced budget, in which government estimate receipt and are equal to government expenditure, जहाँ उसकी रिसिप्ट उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल हो. एंड अदर वर्ड वी कैन से दैट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के उसके रेवेन्यू के इक्वल हों. एंड द मेरिट ऑफ द गवर्नमेंट बजट बैलेंस बजट इज़ टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है. एंड इट अवॉइड द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उनको अवॉइड कर रहा है. And demerit of balanced budget, it does not offer any solution to the problem of unemployment during the depression in the developed countries, and it is a conducive to growth and development program of the less developed countries, and it cannot solve the problem of inflation and deflation. Problem of inflation और deflation की solve नहीं कर सकता है. Next है surplus budget. Surplus budget, this is a budget in which government estimate receipt are greater than the government expenditure. So what is surplus? When you have more of something than you need to plan to use. ठीक, ऐसी सिचुएशन जो क्या कहते हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर से मोर उनकी रिसिप्ट हो, और ये क्या कहते हैं इकोनॉमी बहुत ही कम देखने को मिलता है. तो मेरिट ऑफ सरप्लस बजट इज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी गैप इन द कंट्री डिजायर ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी गैप इन द कंट्री. इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री. एंड डिमिनिट इट डज नॉट डिजायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन. डिफ्लेशन के पीरियड में ये डिज़ायर्स नहीं किया जाता है. Next and last most important, deficit budget. And deficit means can be occur when the government company person spend more than it receive. And we can say that this estimate government expenditure greater than the government receipt. The merit, it accelerates the economic growth, it enables the undertake the welfare program of the people, it desired during the period of deflation. And the demerits of the it encourages the wasteful unnecessary expenditure by the government, and it may lead to the financial political instability. It now used desired during the period of inflation. So deficit means it refers to the situation when budget expenditure of the government is greater than the budget receipt. Means we can so the balance deficit is equal budget deficit is equal to balance expenditure minus balance receipt. And the type of budget receipt, there are revenue deficits, fiscal deficits, and the last primary deficits. The revenue deficits, we can say that excess of government total expenditure over the total revenue during the fiscal years, and fiscal deficits, excess of total expenditures over the total receipt excluding borrowing during the fiscal years. And what is the प्राइमरी डिफिट्स? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डिफिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. इन दोनों के डिफिट्स के इंटरेस्ट पेमेंट के डिफरेंस है. थैंक यू.